Our today's class is for 11th. Subject our is geology. Today's topic is types of faults. We have already discussed the faults. What are faults? Faults are the well-developed cracks in the rock formations along which the displacement of the rock beds have been taken place. So the displacement of the beds due to faulting goes either in downward position or in upward position. So normal when we take the types of these faults or when we discuss the types of faults, there are two types of faults: normal fault and reverse. No doubt other types of faults are also like step faults, but in our this class we are going to discuss normal and reverse, which are in our 11th class syllabus. So fault simply means when the rock beds get cracked or fractures, with the result the part of the rock formation or rock structure get displaced either in downward position or in upward position. So when we see here, this is a fault plan. The rock bed either moves in downward position or it can move in an upward position. So from this point, the rocks move either upward or downward. When we see the normal fault, a normal fault is one in which the hanging wall it moves towards downward side. This is the example. With the help of this figure we can understand what is a normal fault. A normal fault is one in which the hanging wall moves apparently downwards with respect to footwall. This is our footwall. So the part of the rock formation or structure which moves from its original position to downward side, that is known as a hanging wall, and the part of the rock formation which left behind at that place is known as footwall. So normal fault is one in which the hanging wall moves downward side. So and the maximum stress and due to the hanging part, the maximum stress is vertical, whereas the least is horizontal. So the hanging part makes the stress in a vertical position. That is why it is a hanging. So when we see the reverse fault, a reverse fault is one in which hanging wall moves towards upward side with respect to the footwall. This is a footwall. Here this example, this figure easily understood as that this footwall remains at its original place, whereas the hanging wall, due to fracturing or due to cracks in the rock beds or due to the internal forces inside the earth, due to movement of tectonic plates or due to internal pressure, internal activities, this hanging part moves upwards. So with the result, with respect to the footwall, with the result, this type of faulting is known as reverse faulting. So simple. Normal faulting is one in which hanging wall moves downwards, and reverse faulting is it is reverse when hanging moves upwards from its original position, from the footwall with respect to the footwall. Simply here one point is point of difference. In normal fault maximum stress is vertical,
while as least is horizontal. Here is opposite of it, reverse of it. Maximum stress is horizontal. That means this hanging wall pushes stress on this foot wall. That is horizontal stress is on this faulting, whereas least is vertical. So in vertical position there is no stress, but this horizontal stress is there. That is why hanging wall is in upward side, which makes stress on this foot wall or hold rock formation. So I have also given you a figure here. This is simply a normal fault where block of rock formation moves downward side, and there is also the change in the beds. This bed moves into this part, and while as this top sandstone bed moves into at which almost is in align with conglomerate bed. Here in reverse fault, this fault plane we see at the bottom side, whereas this hanging wall, hanging part of this block moves upward side. So here there is the direction towards upward side. This is reverse fault, whereas there is the direction of this faulting or dip direction towards the downward side. So this is normal and this is reverse fault. If we easily try to understand that in a simple language, ये जो हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है सिंपल सा है एक रॉक फॉर्मेशन में। जब एक हमारी रॉक फॉर्मेशन है, जब वो ब्रेक, जब एक साइड में उसका क्रैक हो जाता है, विद द रिजल्ट फॉल्टिंग टेक्स प्लेस, और ये जो फॉल्ट प्लेन है इसके अलावा जो फुट वॉल होता है ये अपनी जगह पे रह जाता है, पार्ट ऑफ रॉक फॉर्मेशन। व्हेयरएज जो बाकी वॉल पार्ट ऑफ रॉक फॉर्मेशन जिसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं, वो नीचे चला जाता है। सिंपली इट मूव्स डाउनवर्ड साइड। जो हिस्सा इसका पहले था और नीचे चला गया उसको हैंगिंग वॉल कहते हैं। इसी तरह से जो स्ट्रेस है वो वर्टिकली स्ट्रेस रहता है, क्योंकि एक जो वॉल रहता है रॉक स्ट्रक्चर का वो हैंगिंग रहता है। व्हेयरएज इन केस ऑफ रिवर्स फॉल्ट में क्या हो जाता है, बजाय नीचे चला जाने के बजाय ये जो हैंगिंग वॉल है ये ऊपर चला जाता है, और जो स्ट्रेस होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस रहता है इसके ऊपर, और जो वर्टिकल वो लीस्ट रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल रहता है और लीस्ट वर्टिकल। व्हेयरएज इन नॉर्मल फॉल्ट मैक्सिमम जो स्ट्रेस रहता है वो वर्टिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस रहता है, व्हेयरएज हॉरिजॉन्टल लीस्ट मैटर्स, लीस्ट कम रहता है। सो नॉर्मल फॉल्ट सिंपली जब हम बात करेंगे, नॉर्मल फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें हैंगिंग वॉल नीचे चला जाता है विद रेस्पेक्ट टू द फुटबॉल। अगर हम फुटबॉल की बात को फुटबॉल को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो हैंगिंग वॉल नीचे चला जाता है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस वो वर्टिकली रहता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम रहता है। जबकि रिवर्स फॉल्ट में जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर चला जाता है, रिवर्स इसके रिवर्स हो जाता है, अपोजिट होता है। नीचे चला जाने के बाद इसके अगेंस्ट ऊपर चला जाता है, विद द रिजल्ट जब ये ऊपर चला गया, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू फुटबॉल को मद्देनजर रखते हुए ऊपर चला गया। दैट मीन्स विद द रेफरेंस, हमें जरूरी याद रखना पड़ता है कि ये जो फुटबॉल है इसकी रेफरेंस देके कि वो हैंगिंग वॉल नीचे चला गया या ऊपर चला गया। रिवर्स में ऊपर चला जाता है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है रिवर्स फॉल्ट में, और जो लीस्ट उसमें लीस्ट स्ट्रेस वर्टिकल रहता है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों है इसमें। सिंपल सा आसान सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। इसमें हमारा सिलेबस में नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the types of normal and reverse, which also easily to be understood with the help of these figures.